तो सबसे पहले आप अपने बारे में यहाँ पे जो है एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Yes, sir. Sir, first of all, I am very grateful, thankful for you, sir, providing me this big platform. Sir, I am passed after passing my matriculation and ISC. I just cracked a diploma and I got Muzaffarpur Polytechnic, Government Polytechnic Muzaffarpur, and then I am pursuing after cracking BCECE LE exam, BTech from MC Motihari College under Aryabhat Knowledge of University, sir. Okay. What you get a score in BCECE LE exam? Yes, sir. My UR rank was 574, and my OBC rank is 142. UR rank कितना बोले? 574, sir. Okay, 574. Okay. How you crack this exam? What is your schedule? Sir, this exam is not a big task. This is simple, sir. Just you have to devote minimum time along with your semester exam, sir. I have devoted just 1 to 2 hours on daily basis on each subject, sir. Mainly I focus mathematics because mathematics is very much scoring than mechanics, because mechanics syllabus little bit harding. Yeah, obviously. Or also rank also depend on firstly engineering mathematics, then go to mechanics. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So when you prepare your exam, what is the hardest topic in the mathematics? So hardest topics, if you see hardest topics of mathematics, I'm not feeling any topics hardest, because my preparation was almost going on smoothly that times. And initially my mathematics background is strong, so I not felt hardest. So Okay. In diploma, which branch you belong? so in my diploma branch is mechanical engineering, sir. Okay. And in BTech, you change the branch or is the same? No, sir. In BTech, my same branch. Okay. Have you any difficulties with the semester exam with the after this? क्योंकि lateral entry No, sir. because lateral entry exam No, sir. और दोनों साथ में था आपका. Yes, sir. There is no sufficient gap of LE exam and my final year semester exam. So little bit challenge for me, but it will be finished if you devote 1 to 2 hours on daily basis. Okay. आप ये एक चीज और मुझे बताइए कि आप जो है जब सेमेस्टर एग्जाम दे रहे थे तो लैटरल एंट्री एग्जाम भी था, आपने बताया कि 1 से 2 घंटा मैं डेली बेसिस पे टाइम देता था, तो उस दौरान आपको कई बार लगा तो जरूर होगा कि मेरा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस तरीके का डिमोटिवेट कभी हुए थे? Yes, sir. It's simply I am demotivating many times, but in mind I am just cracking exam was keep. Okay, तो मोटिवेट होने का कारण क्या था? So my motivating reason is I have no any path beside this to further educations, and I have to do further educations for achieving my goal. So this is my only one path on which I can achieve on future goal. So I have to do, sir. Okay.
that times in mind coming. आप जब एग्जाम देने गए थे अपने सेंटर पे, तो आपको डर वगैरह लग रहा था या फिर नॉर्मल कैजुअली आप गए थे? Yes, sir. Initially, when saw questions paper, I was I have some fears, but after sometimes when starting solving questions of mathematics, then I was normal. ओके, मैथमेटिक्स का आपने प्रिपरेशन कैसे किया था? Yes, sir. Mathematics. For mathematics, one book I recommended, B.S. Agrawal's. B.S. Agrawal, some questions directly asked from B.S. Agrawal examples. ओके, इस बार जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनका सेमेस्टर एग्जाम और जो लैटरल एंट्री का एग्जाम है उसके बीच में 30 डेज का गैप है, तो उन लोगों का प्रिपरेशन अच्छा से हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं जो भी इस बार एग्जाम दें, या ये वीडियोस हो सकता है 2 साल 3 साल के बाद देखेंगे तो उनको भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कैसे तैयारी करना है? Yes, sir. I mainly suggested those students who cracking BCECE exams. I must suggest first focus on your semester examination of final years, because if you not crack final year exam, then you have to need BCECE ranks. If you have good rank even in BCECE exam, then there is no need in futures if you fail in your semester examinations. So first you have to be careful of final year examination, and you have to little bit devote along with your final year examination to do and to clear BCECE exams. ओके, तो मैथमेटिक्स में वैसे कौन-कौन से वैसे टॉपिक्स है जिसे 30 डेज में कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम इस बार जो है 23 जून को जो है खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद 30 दिन कंप्लीटली बचेंगे उनके पास तैयारी करने का, तो वो मैथमेटिक्स का कौन-कौन सा टॉपिक पढ़े ताकि उनका जो क्लियर हो सके? Yes, there are so many topics in mathematics which is fixed in every years. Okay. When you seeing previous year questions, then we will realize many topics, eigenvalue, eigenvectors, these two topics each and every years, one questions asked each and every year. And beside these many topics, there was also many types of problem coming from integrations, different types of integrations. I was forgetting some types of questions in mathematics. Okay, no issue. इंग्लिश का प्रिपरेशन जब कर रहे थे, क्योंकि इंग्लिश भी जरूरी है, अगर आप इंग्लिश पास नहीं करेंगे तो आपका रैंक जो है निर्धारित नहीं किया जाएगा, तो इंग्लिश का आपने प्रिपरेशन कैसे किया था? क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिससे आपको याद ही करना पड़ता है, उसका कोई आप ट्रिक नहीं होता है, तो उसको आपने कैसे कवर किया था? Sir, for English, your classes must be sufficient. Beyond this, never questions asked from your notebooks, sir. Okay. That is sufficient. Even I will say your. Yeah, बोलिए. Even I will say your YouTube videos is very helpful for English, and I think English is very much sufficient. If you any aspirants see your videos, it will clear easily English. Okay. तो जिस कॉलेज में आप अभी बीटेक कर रहे हैं उस कॉलेज में क्लासेस का क्या इश्यूज है? क्लासेस कैसा चलता है और वहाँ पे सीनियर्स का सीनियर के साथ कैसा बिहेवियर है, टीचर्स का कैसा बिहेवियर है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। Yes, sir.
Currently, I am in MC Motihari College. So here, today's scenario classes is going to be smoothly when I am coming, sir. Okay. And seniors' behavior is almost supporting in nature, sir. There is no issue of any ranking, and there is a competitive environment that is help the student how to prepare and how to make your further future's path. That is very helpful, sir. Okay. और स्टाफ का? And sir, management staff and all things of in my college, today's scenario is going on smoothly, sir. There is no any problem. If you have to read in college, there is so many facility available. You have to do anything. You have to do any practical. You have to do any research papers, and so many things you can do if you interested. So each and everything you have to provided by college management. Okay. जब आप लैटरल एंट्री निकाल कर गए तो सेमेस्टर के लिए कुछ हेल्प हुआ था मैकेनिक्स का या फिर नहीं? Yeah, sir. Mechanics subject in diploma, mechanics was almost good, sir. So there is no much facing problem in third semester BTech, sir. Almost syllabus is same, so there is no issue. ओके, थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़कर अपना जो भी आपका राय था वो आपने जो शेयर किया, और जो भी लोग इस वीडियोस को देखेंगे उसको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। बाकी उन लोगों का जो भी डाउट्स होगा आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसमें भी अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको भी अच्छा जरूर लगेगा कि हाँ, हमने अपनी बातों को शेयर किया, कई सारे लोगों को जो है हेल्प हुआ, क्योंकि पिछले बार भी इस तरीके का किए थे तो कई सारे लोगों का जो है हेल्प हुआ था। Yes, sir. And I recommended one things of new aspirants, sir. Okay. For English, aspirant must have a loosened book. Okay. And for mechanics, you have to not need to do whole mechanics. Just you have to do only two topics of friction. Friction is topics in which 1 to 2 problems on each and every year has been asked. Okay. So in mechanics, frictions and vectors, the two topics is very important. Vector is also in mathematics, right? Yes, yeah, sir. Okay. ठीक है फिर। And mathematics, some portions which was forgetting earlier, so that is plane. One questions asked from plane and one questions asked from cone. And these two questions directly from examples of B.S. Agrawal mathematics. Okay. Then very fine. Finally, आप एक मोटिव वाली बातें या जो भी एज ए शायरी के तौर पे या एज ए मोटिव बातें जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप शेयर कर सकते हैं। यस सर। सर मैं कहना यही चाहूंगा कि अभी सर 1 मंथ का जो समय बचा हुआ है, तो दुख इस बात की है सर कि समय बहुत कम है, और सुख इस बात की है सर कि अभी भी समय है। सो समय आपको इतना समय नहीं देगा कि आपको निर्धारित करने का। सो आई एम फाइनली यही कहूंगा कि इतना 1 महीना में इतना पढ़ाई करो, ऐसे पढ़ाई करो कि उसमें हद पार ना हो जाए सर, क्योंकि कहा गया है कि
सर क्योंकि कहा गया है सर, आई एम फॉरगेटिंग। ओके, इसके जगह पे कुछ और बता दो। यस सर। सर कहा गया है कि जैसे मंजिले उसकी मंजिले पर जाने के लिए छत की सीढ़ी उसकी मुबारक होती हैं, जिसको छत पर जाना होता है। हमें तो मंजिले पर जाना है, तो हमें अपने मेहनत के पसीने पर जाना होगा। छत के सीढ़ी से हमें छत पर ही जा सकते हैं, लेकिन मेहनत के पसीने से अपने जिंदगी के अंतिम छोर पे जा सकते हैं। बिल्कुल, दैट्स राइट। चलो, थैंक यू, आप जुड़े और लोगों को मोटिवेट किए। बाकी जो भी डाउट्स होगा, लोग आपका नाम जरूर लेंगे कि आपने जो है मोटिवेट किया है, क्योंकि वे लोग हमारे थ्रू ही आपको देख रहे हैं, बट बात तो आपकी ही है, आप जो शेयर किए वही चीज वो देखेंगे। यस यस।